Hello students, very good morning. Today we are going to study about the chapter light. It will be helpful for the 9th standard Icse board, 10th standard student CBSE board and 12th standard CBSE board students. It will be helpful. So study the chapter light. Light is a form of energy which produces sensation of sight. We can see any object due to the light. What is darkness? Absence of light is the darkness. Darkness is nothing. Absence of light. So when the light strikes any object, it bounces back in the same medium, and the reflected light from the body having different intensity and reaches the retina, and through sensory nerves we get the information in the brain with the speed of light. We can say electrical waves, and our brain can recognize the object. Oh, this is the object. Okay. So what is reflection? The first topic of this chapter is reflection. See, light has specific property, means light can be polarized, light can be diffracted, light can be refracted, light can be polarized. Number of things we can do with the light. Here we are going to study about the first of all the reflecting surface. If you see, this is the glass, and to the back side of the glass is painted silvery. It is silvery painted backside, so it becomes a reflecting surface. The back portion is silvery polished, so it becomes a shining surface, and this is a plain surface, so you get a reflecting surface. And when you draw a perpendicular on the reflecting surface, it becomes normal. It is called normal. You can do like this, it will go like this. If it is reflecting surface, it will be normal. Normal is a perpendicular drawn on the reflecting surface, that is called normal. And what is reflecting surface? The surface which is silvery polished on one side. The other side become reflecting surface. See, this is the reflecting surface and this is the normal. If this is the reflecting surface, it will be normal. You can see, you can put like this, it is a reflecting surface, it is a normal plane. Normal plane, okay. And this is the plane, this is the normal. Normal means perpendicular to the plane. So this is the normal, and when this is like this, it will be plane, okay, normal plane. The plane perpendicular to the reflecting surface is called normal plane, and the perpendicular line drawn on the reflecting surface or a plane surface, that is called normal. Now here we are going to study about the reflection of light. What is the reflection? See, when light incident on any shining surface, it bounces back to the same medium. Now see, this is the reflecting surface and we are painting at the lower portion. This is the reflecting surface. Now, this is the normal, which is 90 degree with it is 90 degree, okay, with the surface. And this, you should put arrow downward. This is called reflecting surface. This is called silvery painted surface. You have to show arrow inward.
and this is called normal. We can say normal plane or normal line. Okay. When you see, this is called incident ray, the ray which is falling on the surface, that is called incident ray. After, when it bounces back to the same medium, this is called reflected ray. Okay. This is called incident ray, this is called reflected ray, means when you can see from this side. You can see from this side. So you can't see object this side, you can't see this object, you will see the image over here. Okay. If this is the object, means I couldn't make. If this is the object and this will be the image. Okay. And this is the same. So this is the incident ray, this is the reflected ray. When there is incident ray, you show the arrow downward. Reflected ray, show arrow other side. Okay. And this is a symmetric, means whatever the angle of incidence, that will be the angle of reflection. If it is 50 degree, it will be 50 degree. I didn't make this good way because it should be like this, it should be like this. Okay. It is not a reflected ray, it will be reflected ray. So the angle always measured with normal, whether it is plane, what is the line which is perpendicular to reflecting surface. When the ray of light incident on the shining surface bounces back to the same medium, this is called reflection of light. In such a manner, the angle of incidence is equal to angle of reflection. The incident ray, normal and reflected ray lie at the same point. This is called point of coincidence. मतलब एक जगह पे आना, उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे जुड़ता है. अगर आपने गलती से भी ये पॉइंट जोड़ा नहीं, इधर कहीं आ गया, इधर कहीं आ गया, आपका जो डायग्राम है वो रॉन्ग हो जाएगा. At the bottom, you write the phenomena of reflection of light. Otherwise, you will get 0.5 marks will be cut from your this. Okay. So, this is the incident ray, this is the reflected ray, this is normal. An angle always measured with normal. Angle always measured with normal. So, whatever the angle with normal incident, the same angle with the normal reflected. So angle I is equal to angle R. This is the law of reflection. Angle I किसके बराबर होता है? Angle R के बराबर होता है. But when the ray of light incident perpendicular to surface, it follows the same path. अगर वो नॉर्मल के रास्ते से आती है तो नॉर्मल के रास्ते से वापस चला जाएगी. ये आप एक बॉल को बिल्कुल वर्टिकल गिराओ, बिल्कुल वर्टिकल ऊपर आ जाएगा उसी रास्ते से. So when light incident perpendicular to surface, it follows the same path. This is called angle I is equal to angle R equals to 0. क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल भी वही है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है एंगल विद सरफेस. क्या दिया रहता है? एंगल विद सरफेस. सरफेस के साथ मान लो 60 डिग्री एंगल दिया है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. गॉट इट? अच्छा लगा ये क्वेश्चन? तो when the ray incident on the surface bounces back to the same medium, एरो अंदर की ओर दिखाना जरूरी है, एरो बाहर की ओर दिखाना जरूरी है. इफ यू आर नॉट शोइंग एरो, योर मार्क्स विल कट. एंड द पॉइंट शुड बी परफेक्ट. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट होना चाहिए. दो भी रे अगर अलग अलग आ जाती तो रॉन्ग हो जाएगा. इतना आसान नहीं होता. जो डायग्राम्स होते हैं वो प्रॉपर पैटर्न्स होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए. सो यू गॉट, this is incident ray, this is the reflected ray, this is the normal, and this is the point of coincidence. This is a silvery painted surface, this is the reflecting surface,
and this is a plane surface. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन. और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी. लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो ब्लर दिखेगा, आप किसी चीज को पहचान नहीं सकते. तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस जो होता है वो इरेगुलर होता है, नॉट स्मूथ. यहाँ पे क्या सरफेस था? स्मूथ सरफेस था. स्मूथ सरफेस था. यहाँ पे क्या है? इरेगुलर सरफेस है. तो जब लाइट रे ऐसी आती है तो वो ऐसी बेंड हो जाती है, यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर हो, इसकी गारंटी नहीं है. तो एंगल आई कभी भी एंगल आर के बराबर नहीं होता. तो हर रे अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण आंखों में अलग अलग एंगल से बहुत सारी रेज आ जाती हैं. तो हम लोग कोई पर्टिकुलर इमेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ब्लर दिखाई देता है, साफ दिखता नहीं है. तो इरेगुलर सरफेस रहेगा तो क्या रहेगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और क्लियर सरफेस रहेगा, प्लेन सरफेस रहेगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन. और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन दिखता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही दिखेगा. अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, तो ये बता रहा, द रे कमिंग टूवर्ड्स द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. आफ्टर बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, द कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. एरो विल बी इनवर्ड, ऐसे बोलना, इसमें एरो विल बी आउटवर्ड. नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर सरफेस. नॉर्मल के रास्ते से आएगी तो उसी रास्ते से वापस ले आएगी. एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा. और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट. सब एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉइंसाइडेंस. और नीचे लिखेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक ग्लास रख देते हैं ऐसा, ये ग्लास रहता है, ग्लास प्लेन ग्लास रहता है, मिरर रहता है एक तरीके से, उसको रख देते हैं. और ये मैं तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत कम टाइम में, ताकि दूसरा भी लेक्चर अपन तैयार कर सकें. तो इसके बाद अपन दूसरा लेक्चर तैयार करेंगे. स्टूडेंट्स गेट रेडी, है ना. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑफ द शाइनिंग सरफेस और सिल्वरी पॉलिश्ड प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस, it bounces back to the same medium in such a manner, angle I is equal to angle R, and the incident ray, reflected ray and normal lie at the same point on the plane. When the ray coming through normal or a perpendicular to surface, it follows the same path, angle I is equal to angle R is equal to 0 हो जाएगा. और always angle measured with the normal, अगर surface से angle measure कर रहा है तो 90 से माइनस करना. आपको करना क्या है कि आप एक ऐसे रे बनाना और यहाँ पे एक पिन लगाना, जो ऑल पिन होती है ना वो लगाना है. उसका डिस्टेंस ज़्यादा मत रखना, बिल्कुल पास ही रखना दोनों को. और दोनों को यहाँ पे एक पिन लगा देना ऐसे, और यहाँ पे एक पिन लगाना. और ये एक नॉर्मल तो ड्रॉन कर ही रहेगी आपने, तो ये एंगल रहेगा 30 डिग्री मान लो, समझ गए. अब आपको उस तरफ जाना पड़ेगा. आपको यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे 2 पिन दिखेगी आपको अलग अलग, ऐसे दो पिन दिखेगी. एक जैसे मान लो आप यहाँ से देखोगे तो एक पिन की इमेज यहाँ दिखेगी, एक पिन की इमेज दिखेगी, ऐसे ऐसे कुछ इमेज दिखेगी. तो अपने आंखों को ऐसे लेते जाना, ऐसे लेते जाना, चेंज करते जाना पोजीशन. आपको क्या दिखेगा कि ये दोनों पिन एक ही रास्ते में, यानी कि यू विल सी, अगर 30 डिग्री, जो 30 डिग्री था, अगर 30 डिग्री पे आप जाओगे तो एक पिन यहाँ दिखेगी और एक पिन यहाँ दिखेगी, जब आप यहाँ से देखोगे तो, समझ गए. तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये पिन एक ही रास्ते में दिखेगी. इसका मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर 30 डिग्री पे एंगल बनाएंगे हम नॉर्मल के साथ तो 30 डिग्री पे आपको इमेज दिखाई देगी. अब एक और कंसेप्ट होता है कि अगर लाइट को इस रास्ते से भेजा जाए तो ये सेम रास्ते से वापस आ जाएगी. तो जिस रास्ते से लाइट जाती है और उसी रास्ते से लाइट वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो लाइट अगर यूं आई और यूं चले गई तो यूं आके यूं चले जाएगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा, या रिफ्रैक्शन होता है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगता है. तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल.